नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। साउथ के सुपरस्टार और नेशनल क्रश विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे को मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते देखा गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई कि सुपरस्टार सब लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। अपनी लग्जरी कार्स को छोड़कर क्यों करना पड़ा विजय और अनन्या को लोकल ट्रेन में ट्रैवल? साथ ही कौन है वो जिसने उड़ाया विजय के स्लीपर्स का मजाक? आइए दिखाते हैं आपको। अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर को लेकर हेडलाइंस में बने हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे फैंस ने खूब पसंद भी किया। वहीं अब अनन्या और विजय जोर शोर से फिल्म के प्रमोशन में जुट गए हैं। लगता है कि विजय और अनन्या फिल्म के प्रमोशन में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहते हैं, इसीलिए तो प्रमोशन के सिलसिले में ट्रैवल करने मुंबई लोकल पहुंच गए। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे ने फिल्म के प्रचार के लिए महंगी गाड़ियों को छोड़कर मुंबई की लोकल ट्रेन को चुना। दोनों ने मुंबई के खार स्टेशन से लोअर परेल तक का सफर तय किया। मुंबई लोकल में ट्रैवल करने पहुंची अनन्या येलो कलर के टॉप और ब्लू डेनिम जींस में काफी स्टाइलिश नजर आई। तस्वीर में अलग अलग पोज देती भी वो नजर आई। वहीं कैजुअल टी शर्ट और जीन्स में विजय देवरकोंडा काफी कूल दिखाई दे रहे थे। नोटिस करने वाली बात तो ये है कि एक्टर नॉर्मल चप्पल पहनकर पहुंचे। इससे पहले ट्रेलर लॉन्च पर भी वो स्लीपर पर पहुंचे थे, जिसके लिए रणवीर सिंह ने उनकी मस्ती में काफी खिंचाई भी की थी। इल्नाज का सॉन्ग हुआ रिलीज, जिसको उन्होंने खुद अपनी YouTube चैनल पर अपलोड किया है और जिसके लिए एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा इल्नाज ने अपने सॉन्ग से रिलेटेड। इल्नाज ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर अपना सॉन्ग रिलीज किया है, जिसको फैंस का काफी प्यार मिल रहा है। ना कि सिर्फ फैंस बल्कि बॉलीवुड टाउन के सलमान खान, बादशाह जैसे बड़े स्टार्स भी इसका प्यार जताते हुए स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अपने इसी सॉन्ग को लेकर इल्नाज ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछे जाने पर कि आपके इस सॉन्ग पर किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो देखिए क्या कुछ कहा इल्नाज ने। Okay, so firstly, congratulations with your new song on your album and the first time you're singing the song, and Yes. tell us what kind of response you're getting. Yeah, the response is great. I mean, people are loving it, and they're all telling me that the beat is great, and that the main feedback that I keep getting is that everyone says that during the day we keep singing from la la love. You Yeah. know, and I think that's very important when there's a song which stucks to people's mind. Yeah. That's very cool, and I'm happy because I really worked hard on this song. I really worked long on this song, and yeah, so I'm glad if it's stuck in people's mind. And, That's what it's supposed to be. फिर मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपने ये कब डिसाइड किया कि आप गाना गाना चाहती हैं। क्या कुछ कहा इस पर इल्नाज ने, आइए सुनिए। This is the first song, and when you decided that you want to sing a song? I was actually never really planning to sing as such, because I was always concentrated on acting, and when I started working on my voice I was actually really wanting to work on my voice as an actor. So I went to a vocal coach, and when we were working together, she used to tell me that you are actually so good, and what I'm doing with you right now, I'm usually doing with students after 10-15 classes. You should sing. And I was like, yeah, I mean, I never thought of singing. I'm not a singer. But then her thoughts, and then when I was stuck in Germany during Corona, there was this music manager who told me he wants to do music with me. And I was like, अरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि I should sing, so let me just try. And वैसे I'm not working right now, and there's no shoot, we're stuck.
So I kept working on my voice. I kept going to the studio, jamming, trying to make La La Love with the producers and the lyricists. And this is how La La Love was born, basically, in Germany. And this is how it all happened. So that made one more option open for the Dharma production, because you say that you want to work for the Dharma production. Yeah. तो एक और ऑप्शन मिल गया धर्मा प्रोडक्शन. आप इस तरह देख रहे हो, एक और ऑप्शन मिल गया टू साइन यू फॉर द धर्मा प्रोडक्शन. किस तरह से देख रहे हो? Yeah, as a singer also, as an actor also. Well, you never know. I mean, I'm not singing Hindi, I'm singing English so far. But, well, you never know what I could do. But I don't look at things like that कि यार मैं ये करूँगी ताकि you know, Dharma Productions मेरे पास आ जाए, or you know, they want me to sing. I do it because I love it and I believe in what I do. So if Dharma or anyone else ends up liking what I do, I will be proud to work with whoever thinks that I have potential. But I just try to do better, try to do more in what my capacity allows and what I can do well. If I know that something is not in my abilities, I will just not touch it. And tell us something about the song. When do you get the lyrics? About the lyrics, la 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 love, la 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 love. Yeah. It's like love, 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 and love is like. Love is very important to me. Yeah. I mean, I don't know if a lot of people know, but I'm a very, very emotional person. Like, I have the emotional side to me, which is my Iranian side, and the very straightforward, strong German side also to me. But love is something that is very important to me. I also really wanted, like when we were making La La Love, in my mind there was summer, dance, club, fun, love. And these were the words that we were working with when we were writing La La Love, when we were making La La Love. So it's that, and it was just about, you know how it is. La La Love, it's easy for you to say it, right? So we wanted to make sure that it is catchy and it stays with you in your mind, and the beat, and you can listen to it in a car on a summer day, you can listen to it in a club. And for me it was very important that it has a dance part, because I mean I perform in other songs and movies, and I wanted to make sure that my own first song also has a part where I can perform, and you know, it's my own song, I want to perform in that too. So these were the thoughts, and this is how we made La La Love.